Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we begin, I would say life shrinks or expand in proportion to one's courage. तो चलिए फिर आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. केरला गवर्नर says he can sack errant ministers. It is available on page number 1 और ये related है paper 2 Parliament and State Legislature से. In this article we have to know about governor, appointment, functions and powers. तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है. लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, ठीक. Our next important headline is Principles of CAA can apply to Lankan Hindu Tamils, says High Court Judge. It is available on page number 4 or year related paper to government policies and interventions say. In this article we have to know major provisions of Citizenship Amendment Act 2019, concerns, government stand and what lies ahead. दोस्तों इस एक्ट को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. Our next important headline is in run up to polls, Gujarat announces 2 free cylinders to Ujjwala beneficiaries. It is available on page number 4 और ये related है paper 2 welfare scheme section से. In this article we have to know about PM Ujjwala scheme, objectives, challenges and way ahead. दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है. अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट announced reduction in value added tax on CNG, PNG by 10% and said 2 cooking gas cylinders will be given free every year to 3.8 million beneficiaries who have got gas connections under the government's Ujjwala scheme, right? Our next important headline is today's weapon of choice, it's expanding dimensions. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 cyber security section से. In this article we have to know about the nature and consequences of cyber attacks, various efforts and what more needs to be done in this context. दोस्तों ये आर्टिकल पूरा साइबर अटैक्स के ऊपर बेस्ड है और बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक. Our next important headline is recovery analysis that points out what India got wrong. It is available on page number 6 और ये related है paper 2 issues relating poverty and hunger. तो दोस्तों in this article we have to know about the findings of World Bank report titled Correcting Course and we have to know about the impact of the COVID-19 pandemic on global poverty, other issues highlighted by the report, government's initiatives and what lies ahead. तो दोस्तों this report captures the impact of COVID-19 pandemic on global poverty. According to the report, the number of people living in extreme poverty rose in 2020 as global poverty rate rose from 8.5% to 9.3% in 2020, right? This is the first time in 2 decades that the poverty rate has gone up, ठीक. Our next important headline is Gone Girls. It is available on page number 6 और ये related to paper 1 women related issues section से. In this article we have to know major reasons for violence against women, issues and various laws and legislations and what needs to be done in this context. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एक बार आप देख लीजिएगा. अगर हम डाटा की बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स more than 4 lakh crimes against women happened in 2021. These included rape, murder, dowry harassment, kidnapping, forced marriage, trafficking and online harassment, right? Our next important headline is Hindi imposition and its discontents. It is available on page number 8 और ये related paper 2 government policies and interventions से. In this article we have to know about the reported recommendations of the parliamentary committee on official language, how have regional leaders reacted and what is the alternative suggested by critics of the proposal. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल है, वहां से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक. Our next important headline is How does tokenization prevent online card fraud? It is available on page number 8 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know about tokenization, why is it necessary and what are the benefits. तो दोस्तों इसको भी हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है. अगर हम ओवरव्यू देखें तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड टोकनाइजेशन ऑफ क्रेडिट डेबिट कार्ड्स फॉर ऑनलाइन मर्चेंट्स फ्रॉम अक्टूबर 1st. अगर हम टोकनाइजेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन अल्टरनेटिव कोड कॉल्ड टोकन which shall be unique for combination of card and the token requester, right? Our next important headline is Commodity Fetishism, how products of labor attain mystical features. It is available on page number 9 और ये related paper 1 society से. In this article we have to know about commodity fetishism. ये ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों. इट डिस्क्राइब्स हाउ सोशल रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज अमंग पीपल टेक द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स अंडर कैपिटलिज्म, राइट? Our next important headline is Interpol has no role in curbing state-sponsored terrorism, says official. It is available on page number 11 और ये related paper to international institutions से. In this article we have to know about International Criminal Police Organization, also known as Interpol, right? दोस्तों इसको हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा.
Our next important headline is about 41.5 crore Indians out of multi-dimensional poverty since 2005-6. It is available on page number 12. और ये related से paper 2 issues related to poverty and hunger. तो दोस्तों, in this article we have to know about the findings of multi-dimensional poverty index. तो दोस्तों, recently released by United Nations Development Program and Oxford Poverty and Human Development Initiative. According to it, 41.5 crore people exited poverty in India during the 15 years period between 2005-6 and 2019-21, right? Our next and last important headline is PM Modi inaugurates One Nation One Fertilizer scheme. It is available on page number 12 और ये related है paper 3 agriculture section से. In this article we have to know about the One Nation One Fertilizer scheme. दोस्तों, recently Prime Minister of India inaugurated 600 Samriddhi Kendras and One Nation One Fertilizer scheme. These initiatives are aimed at modernizing agriculture. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग. फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स.